नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आज हम मिल रहे हैं वापस एक जो सीरीज आपकी चल रही है एनसीईआरटी फाउंडेशन की, उसी के इस पूरे समकक्ष में आप देखेंगे कि क्लास 12th की एनसीईआरटी हम लोग देख रहे थे और इसमें इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की एक एनसीईआरटी आती है। अब इसमें बहुत ज्यादा जहां पे यूपीएससी चीजें आएंगी हम खुद रुक जाएंगे, जहां नहीं आएंगी आप बस टॉपिक देखिए और आगे चलते रहिए, यही बस हमें इससे सीखना है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। उम्मीद है आप लोगों तक आवाज ठीक से जा रही हो। अगर जा रही हो तो एक बार हाँ कर दें कि हाँ आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है। इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश की जा रही है आपको बेस्ट कंटेंट देने की, और इस चेहरे को अब आप काफी महीनों से देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कोशिश की जा रही है कि एक नई चीज आपको दी जाए, अलग से दी जाए, स्टैंडर्ड कंटेंट दिया जाए, ताकि आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रख सकें, आप खुश रह सके उस कंटेंट से और उसको यूज कर सकें, उसका यूजेबिलिटी ज्यादा हो। गुड इवनिंग, जय हिंद जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। आप में से काफी लोग तो सब्सक्राइब कर चुके हो चैनल को, अभी भी अगर कोई नहीं किया है तो ये चैनल है, देख लीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चंद्रमौली सर फॉर यूपीएससी है ये, और जो ग्रुप का नाम है वो है चंद्रमौली SIR। ये दोनों ही आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे चीजों के साथ, हम लोग कब क्या कर रहे हैं। जो चाहते आपके एजुकेटर्स हैं, जो हमेशा कोशिश करते रहते, तत्पर रहते हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने की, वो यहाँ पे सारे ही हैं और वो कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने की। तो कंटेंट यूज करिए और क्रैक करिए इस एग्जामिनेशन को, यही हमारी मंशा भी है। चलिए आगे चलते हैं। और वैसे इसका जो टाइटल पड़ा हुआ है वो माइग्रेशन का पड़ा हुआ है, हालांकि हम लोगों ने माइग्रेशन कल ही देख लिया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आज एक छोटी सी चर्चा करेंगे और यहीं से प्रश्न बनने की गुंजाइश भी होती है। पीटी में कैसा बनेगा अभी बताएंगे, और कैसा मेंस में आएगा अभी बताएंगे, उसका जवाब भी आप ही से लेंगे। पर चालू करने से पहले आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताना चाहते हैं। सुविचार है आज का, सुनिएगा गौर से। कहा जाता है कि जो लोग पास्ट में जीते हैं वो पास्ट के ही होके रह जाते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते। जो फ्यूचर के लिए परेशान है वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। इंसान वही सर्वश्रेष्ठ हो सकता है या उसी के आसपास सारी सफलताएं आ सकती हैं जो वर्तमान में जिएगा और वर्तमान की चीजों को ही रेस्पेक्ट देगा। तो गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणः। जो अभी और इसी वक्त जो भी चीजें हैं उसी पे बस ध्यान देगा, वही सफल होगा, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो कई बार हम लोग को लगता है कि हम हमेशा उसके लिए परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है हिमालय जैसे कि हम बहुत चीजों पे परेशान हो सकें, पर हमारा शायद ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा है कि हम उन चीजों के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और हमें अपना गम हमेशा सबसे बड़ा ही लगता है। थोड़ा सा इसे स्टेप आउट करके देखिए कि आपका गम वाकई में दूसरों के हिसाब से कम ही होगा, और जो है उसको ही अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने शायद रिस्पेक्ट से, एक बहुत बड़े अपने तजुर्बे से, अपने प्यार से अगर सींचते रहें तो शायद वही चीज आपके लिए बहुत कारगर हो सकती है। और इस यूपीएससी एग्जाम में देखा गया है, गुड इवनिंग, जय हिंद। यूपीएससी एग्जाम में तो वाकई में देखा गया है, आपको एक फैक्ट बता रहे, समवन गेटिंग रैंक समवेयर अराउंड जिसमें उसको आईपीएस मिला। अब सोचिए आईपीएस मिलने के बाद में भी कोई कैसे परेशान रह सकता है। परेशानी ये है कि आईएएस नहीं मिला। हम लोग चलिए हो सकता है एस्पिरेशन होगा कि आईएएस ही मिले। किसी को आईएएस मिला, वो अभी भी चिंता में ही था। क्यों चिंता में था? कि सर होम कैडर नहीं मिला। मुझे चलो हो सकता है भाई ये भी चिंता हो। किसी को आईएएस और होम कैडर ही मिला, वो भी चिंता में ही था, वो भी परेशान था। अब परेशानी का लेवल हर जगह देखने को मिला था। ये क्यों परेशान था? सर इतनी उम्र हो गई है कि अब हम चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकते। अब आपके दिमाग की सारी उपज है, इसको किसी ने ट्रेन तो किया नहीं है, इसने सब कुछ अपने आप से समझ रखा है, तो हम उसमें खुशी नहीं होना चाहते हैं जो अभी का मौका है। हमें हर समय बस एक नया चीज चाहिए, और हमें हर समय वो चीज चाहिए जो हमारा मन हमें दिखाता है। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए और इसको ये समझाइए कि जो है वही बेस्ट है। और इस दुनिया में जब आप ये समझ जाएंगे कि जो है वही बेस्ट है, तो आपको आधे दुख दर्द आपके, मोर देन आई वुड से, आधा, इट विल बी ऑल वैनिशिंग। चलिए इसी के साथ चालू किया जाए आज का सेशन। और स्वाभाविक था ये बातें करना भी, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट की ही हम बात करने वाले हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट की हाल ही में सितंबर में आप देखेंगे तो रिपोर्ट भी जारी हुई है। आइए देखते हैं, कुछ तथ्य हम आपको देंगे, उसको आप लिख लीजिएगा ताकि आपके काम आ सके। ह्यूमन डेवलपमेंट की आप बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जब तक हम आगे पढ़ रहे हैं नीचे लिखिए कि कौन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
पब्लिश करता है? कौन देगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? जल्दी से बताइएगा। 2021-22 की रिपोर्ट है जो कि अभी हाल ही में सितंबर में रिलीज हुई थी। इंडियाज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है जिसमें सारी कंट्रीज को नंबर दिया जाएगा और उनकी रैंक दी जाएगी, हैज स्लिप्ड फ्रॉम 130 इन 2020 टू 132 इन 2022। हम 130 से 132 पे स्लिप कर चुके हैं। 2020 से 2022 का रिपोर्ट अगर कंपेयर करेंगे तो हम 130 से 132 पे आ चुके हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद। इन लाइन विद द ग्लोबल फॉल इन एचडीआई स्कोर्स, और ऐसा सिर्फ हमारे यहां देखने को नहीं मिला है, एचडीआई के स्कोर्स दुनिया भर में गिरे हैं। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं, इंडिसेस हैं, वो दुनिया भर में गिरे हैं। क्यों? रीजन आपको पता है, पैंडेमिक। इस कोविड पैंडेमिक ने सारी हॉस्पिटल की व्यवस्था, सारी चीजों या जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, स्कूलिंग हो, जीडीपी हो, सबको एक जगह लाके बस स्थिर कर दिया। अब सारे हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट, और ये कोविड पेशेंट भले रिकवर कर गए, पर जिन लोगों को हो सकता है और शायद इलनेस रही होगी, उन लोग का इलाज नहीं हो पाया और वो चल बसे। स्कूलिंग की भी यही हालत रही है। 2 साल जब स्कूल नहीं जाया गया, लोग नहीं गए, कुछ लोग का तो फाइनल ईयर भी आ गया, बेचारे कॉलेज ही नहीं देखे थे। अब ये सब ही हुआ है, देखने को मिला है। स्कूल में अब नया नया जा रहे हैं तो उनका मन नहीं कर रहा है जाने का। सो ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड, और इसकी वजह से पूरी दुनिया भर में ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टर या पैरामीटर्स जब नापे गए तो वाकई में उनका स्कोर कम हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इस पूरे जो पैंडेमिक टाइम को आप सिर्फ इकोनॉमी से मत तौलिए, इसका इंपैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी पड़ा है और लगभग पूरे ही दुनिया को कुछ वर्षों से पीछे ले गया ये पैंडेमिक। भले इकोनॉमी टर्म की आप बात कर लीजिए, भले आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, भले ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लीजिए, तो पूरी दुनिया को कुछ साल ये पीछे लेके जा चुका है पैंडेमिक। अब वहां से वापस आगे आने के लिए या तो हमें बहुत जल्दी ग्रो करना पड़ेगा, या फिर हमें वाकई में अपने सारे रिसोर्सेस को लगाते हुए, दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए आगे निकलना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमारा रैंक भी 132 रहा। यूएनडीपी आ रहा है, लोग जवाब दे रहे हैं यूएनडीपी। खैर यहां पे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैव बीन रिलीज्ड सिंस 1990 and have explored different themes through the human development approach. It is published by the Human Development Report Office for the United Nations Development Program. बहुत बढ़िया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक ऑफिस के तौर पे वर्क करता है द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी का ही ऑफिस है, उसने पब्लिश की है और करते आ रहा है। यहीं पे एक और प्रश्न हम आपके अभी दिमाग में फीड करना चाहते हैं। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कौन देता है? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कौन देता है? आप कमेंट करिए, तब तक हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय हिंद। आइए, इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो गोल है वो है एक्सप्लोरेशन, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइस एंड फ्रीडम। अब इन तीनों के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट का आपको यूपीएससी एग्जामिनर एक लाइन लिख के दे देगा और आप और हम शायद उस लाइन पे बहस करते रहेंगे अगले 2-3 महीने, जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आएगा। और वहां पे रिजल्ट देखने को भी यही मिलेगा जो यहां लिखा है। ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर क्या है, सवाल यही उठेगा। व्हाट इज द बेस्ट और व्हाट डिफाइंस ह्यूमन डेवलपमेंट द बेस्ट? What is the best definition of human development? यही सिंपल सा प्रश्न रहेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जब आप पलट के देखेंगे तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की एक ही झलक आपको दिखती है बार बार, और वो है आपको चॉइस, फ्रीडम और आपका अपना अपॉर्चुनिटी जो मिलता है उसको ग्रो करते रहना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। इस साल का जो अभी रिलीज हुई रिपोर्ट, मतलब 21 और 22 के बीच की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसका जो थीम रहा है वो ये है, 22 is uncertain times, unsettled lives, shaping our future in a world in transformation. वाकई में the world is in transformation. भले आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, भले आप किसी भी सेक्टर की बात करें, स्पेस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। तो वर्ल्ड इज इन अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग, और ये रिपोर्ट इसी के ऊपर है, अनसेटल्ड टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स,
uncertain times, shaping our future in a world in transformation. So ये 2 PT अलर्ट है यहां पे, बल्कि आपसे जवाब मांगा था, आप लोग जवाब दिए नहीं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? प्लीज नीचे जवाब दे दीजिए। जो लोग बाद में देखेंगे वो बाद में नीचे कमेंट करके जवाब देंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद। तो ये HDI आखिर है क्या? आखिर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इतना पहाड़ा पढ़े है क्या? थोड़ा सा पहले आगे आते हैं, फिर वापस बैक ट्रैक करेंगे। इसको देख के कुछ लग रहा है क्या ह्यूमन डेवलपमेंट क्या ये है जो आपकी एज बढ़ रही है? क्या ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ ये है कि यंग से आप मैच्योर बने, एडल्ट बने और फिर अपने उस काल में जा रहे हैं जहां पे आपको अब लगता है कि मुझे आराम करना चाहिए? ऐसा लगता है आपको? ह्यूमन डेवलपमेंट की परिभाषा अगर आपको लगती है एज वाइज है तो बहुत ही छिन्न होगी वो। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। अब गौर से सुनिएगा, ये PT अलर्ट है आपके लिए और यहीं से वो सिंपल लिख के देंगे। बहुत बढ़िया, अंश जी ने लिखा है UNDP एंड OPHI, बहुत बढ़िया। ऑल्सो UNDP सर, पूरा जवाब दीजिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन देता है? जैसे कि अंश जी ने जवाब दिया है, आप लोग भी दे सकते हैं। सृष्टि जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस। ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर समय, हर क्षण ये प्रोसेस चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्या करने में? एनलार्ज करने में। किस चीज को? द रेंज ऑफ choices that the people would want to have. उनका चॉइस बढ़ता रहे। चॉइस कैसे बढ़ता है? आपके पास चॉइस पहले मोबाइल फोन का था ही नहीं। जब आपके पास चॉइस था ही नहीं तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपके हिसाब से उस समय का रहा होगा। आज आपके पास चॉइसेस हैं कि आप कैसे अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। कैसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस पूरे कनेक्टेड डिजिटल वर्ल्ड में। अच्छा, दूसरा, सिर्फ चॉइस ही नहीं बढ़ाना है, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट। अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ानी है। अब अपॉर्चुनिटीज का कोई दायरा ही नहीं है, आप कहां रोकेंगे जाके? पॉलिटिकल भी अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक भी अपॉर्चुनिटी है, जॉब भी अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी का कोई दायरा खत्म नहीं, आप सीमित नहीं कर सकते कि यहीं तक आपकी अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होगा वैसे वैसे दायरा बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सा सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है आशुतोष पांडे जी, बिल्कुल सही बात, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट या बेस्ट डेफिनेशन इसका क्या होगा ह्यूमन डेवलपमेंट का? तो एक प्रोसेस है जहां पे चॉइसेस एनलार्ज करने की कोशिश की जाती है, जहां पे यह भी कोशिश की जाती है कि अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा मौजूद रहें और बढ़ाती जाएं, एम्पावरमेंट भी हो, एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम अ साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। I think that sums it all. Whether you talk about the freedom to choose, the freedom to stand in an election, the freedom to speak, the freedom to earn, whatever your freedoms you might be thinking, and if you are empowered enough to think for that, everything is going to be summarized in this human development process. So it's an evolutionary process that is taking place. It is not just one or two things that we have to see. It's a very broad coverage. So when you answer in the PT question, always take that broad view. Without you taking the broad view, it cannot happen. The answer will always be a minimal one if you do not take the broad view. Having taken this broad view, now let's come back to what I was trying to discuss. So all over the world, there was a research going on to start upon finding about the human development. How do we assess this human development? And such an index then came by, this human development index, which is a composite index. It's a composite index that measures average achievements in human development taking into account 4 indicators. So broadly 4 indicators will be taken into account, but regardless of anything, these 4 indicators may not be so much holistic, may not be as comprehensive. Today it may be so, tomorrow when the time so changes, these factors can also change. ये बदल सकते हैं. Life expectancy at birth is one of the factors. Life expectancy at birth, which is also be seen in context with a sustainable development goal,
somewhere around number 3, you have to assess here that the life expectancy is one of the factors to check your human development. Why? If you ask me why, I must tell you this life expectancy at birth talks about what are the healthcare facilities available at your place. If your life expectancy is great, that means the infrastructural facilities have been great and the health facilities have been so evolving in a beautiful manner there. If life expectancy अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम है कि आपके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज भी नहीं है। तो सबसे बड़ा जो एक पैमाना देखा गया वो ये था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ही मेजर कर लीजिए, जिससे पता चल जाए कि क्या वाकई में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। दूसरा अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चौथे को जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको एजुकेशन के बारे में भी मिलेगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से साफ तरीके से मतलब निकल रहा है क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर्स हैं आपके देश में। क्या आपने वाकई में ऐसा माहौल बना रखा है जिसे एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर्स ज्यादा है, या आपका माहौल ही ऐसा है कि लोग नहीं करना चाह रहे, एक्सपेक्टेड ही नहीं है। एक्सपेक्टेड तब होगा जब आपके पास संस्थान होंगी, जब वो संस्थान डेवलप कर रही होंगी, इवॉल्व कर रही होंगी। संस्थान नहीं है तो एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा। इसी के बाद आपका आएगा द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब एक तो मेरा एक्सपेक्टेड था कि इतना तो होगा, इस देश में इतने कॉलेजेस इतने स्कूल है तो इतना तो मेरा एक्सपेक्टेड है, पर वाकई में रियलिटी क्या है। एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताता है और एक हमें यह दिखाता है कि वहां पे क्या बिहेवियरल चेंज चाहिए या क्या बिहेवियर है वहां लोगों का, जिसकी वजह से मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ज्यादा है या कम है। क्या लोग अपने आप को स्कूलों में भेजना चाहते हैं या अपने प्रोजेनीज को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते, ये मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग पे डिपेंड करेगा। एक्सपेक्टेड क्या है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा है, पर जाना चाहते हैं, बीच में कोई दिक्कत हो, कोई बिहेवियर ऐसा हो, वो जाना ही नहीं चाहते स्कूल, तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में आपका वो दिख जाता है। ग्रॉस नेशनल इनकम, इन सब का रिश्ता अगर आप देखें ह्यूमन डेवलपमेंट को वाकई में बहुत पैमाने से नापा जा सकता है, पर एक जो इनकम का पैमाना लिया गया है वो सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि आपका पेएबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी कितना है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे वी आर गोइंग टू मेजर लॉट ऑफ थिंग्स विद मनी। ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड विद मनी एंड इन मनी, बट then almost the developmental factors that are there, but for love and emotions they can be measured in money. And if I have good national income and if I have even per capita income that is growing well, I can be assured that my human development will take place, certainly going to take place, if not today then tomorrow. But then it's a very good factor to assess this in order to assess the country's whole human development initiatives or maybe the scheme of things. तो पैसे के बिना तो ग्रोथ ऐसे भी नहीं होगा आज के परिवेश में। तो यहां पे चार चीजों को देखना बहुत जरूरी है। एक आपने देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा आपने देखा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तीसरा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और चौथा आपने देखा है ग्रॉस नेशनल इनकम। अब आपके सामने खुला डिबेट है, इस डिबेट में भाग लीजिए आप लोग और सोचिए, हमसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं ना किसी और से। आप अपने दिमाग से पूछिएगा कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन चार पैमानों पे जो अपने आप को कैलकुलेट करवा रहा है, क्या ये होलिस्टिक है, क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव है? खुद सोचिए अपने आप से और तब जवाब दीजिएगा। यही सवाल है जो मेंस में हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जब भी आप कभी मेंस कोर्स कोई देखें या फिर मेंस आंसर राइटिंग में आप हमसे जुड़े तो हम आपको जरूर ये सब बताएंगे। अब ये पढ़ लेना तो बहुत आसान था, पर अब आप अपना दिमाग चलाइए। इन द चेंजिंग टाइम्स वेयर द वर्ल्ड इज इन ट्रांसफॉर्मेशन, आर द सेम पैरामीटर्स दैट वर चोजन ऑफ द यस्टर ईयर्स will be helpful in assessing the human development in the coming times? Comment. Or the assessment factors for the human development index do require a change. Justify your statement. अब देखिएगा,
ये आपके दिमाग का, ये एस्पिरेंट के दिमाग का है, ये स्टूडेंट नहीं सोचेगा। स्टूडेंट बस एक काम करता है, ये लिखा है इसको लिख लो। एस्पिरेंट करेगा ये काम कि यही क्यों है और क्यों नहीं जोड़ रहे हम। अब यहां पे आप अपना दिमाग लगाइए और खुद सवाल पूछिए और खुद एक आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। आर दीज एनफ? डू वी हैव सम अदर थिंग्स ऑल्सो लेफ्ट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट एंड लेट अदर्स नो कि इसके बिना तो जिंदगी में ह्यूमन डेवलपमेंट की आप बात ही नहीं कर सकते। समझ रहे? डू यू गेट माई पॉइंट? So I want you to write down an answer if you will. I think you should write down if you will. The question is, please write down, in the changing or in the, not changing, let's take in the transforming. In the transforming world today. In the transforming world today, human development index indicators need a revamping to suit the world order. Comment. I often give you comment. The reason for this is when you write something as your own view, you learn that thing also. So comment is a very important one. Almost you try writing comment, you will understand. You will generate some views. So this is one question I want you to write down and submit me. You all have my Telegram ID. Go there. It's Chandramouli. You go there and submit it to me. Let's move ahead. If you've written this, let's move ahead. 250 words, of course, 250 words. Moving ahead. The Human Development Report, the progressive democratization and increasing empowerment of people are seen as the minimum conditions for human development. That's very fair. When you increase the choices, when you increase the freedom, that is a democratization. वो एक डेमोक्रेसी ही है। जब चॉइसेस बढ़ती हैं, बोलने की क्षमता बढ़ती है, चुनने की क्षमता बढ़ती है, तो वो डेमोक्रेसी ही है जो आ रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, जैसा कि हमने बात किया, इंडिया इज रैंक्ड नाउ 132nd among 191 countries and territories on the 2021 Human Development Index. In 2020 report, India had ranked 131st among the 189 countries and territories. The decline in the countries, now this is a very important thing, please understand. The decline that has happened this year is in lieu of, or is happening because of the performance from its previous level, and there is a fall in life expectancy. There's a fall in life expectancy. It's a PT alert for all of you. It's a PT alert. The PT alert is why, or maybe if they ask you majorly, that the rank has slipped down. But what is that primary factor because of which this rank has slipped? What is that primary factor? The primary factor because of which this rank has slipped is your life expectancy that has gone down. And why that might have happened is because the 2 years of corona pandemic, we should not remember, but these have shown us that how hospitals function, how our healthcare is functioning. Of course, we have forgotten those times now and we don't question it now. But yes, there were troubles, there were depression times that we all were facing in some time or in some sense or the other. India's latest HDI value of 0.633 places the country in the medium human development category. Please do remember this. PT alert. It's a very recent one. So I'm doing NCERT, of course, but NCERT would have some old data. So I'm giving you the latest data. Please write it down somewhere in your NCERT itself. This 0.6333 has placed our country in the medium human development category, lower than its value of 0.645 in the 2020 report. The report attributes the drop in HDI from this to this in India's, or it is because of India's falling life expectancy from 69.7 years to 67.2 years. That's a great fall that we are having. 69.7 years, it takes tens of years to increase our life expectancy by some point numbers. It took just 2 years
to devastate that. It just took 2 years to devastate that all our efforts that we have done to increase our life expectancy. It just took 2 years to devastate that. 69.7 we were having as the life expectancy, which fell down to 67.2 years. Just imagine how much problems or how much corrosion or erosion of all these things have happened. Moving ahead. Now, human development is not the talk of today. We are assessing it today, but human development that happens because of some reasons. The same reason that the civilization is going to grow, the same reason that the people would want to live at a place also decides how human development is going to take place. For example, if I take historicity, colonization, imperialism, neo-imperialism, these all have their impacts on human development. Now, please understand, a country A colonizes a country B. So, country A has gone much ahead in time as it has already colonized another country, but the country that has been colonized is shifting much back in the time. So, human development in the colonized countries are going to be taking a very backward turn as compared to the country A that has colonized. The same is true for imperialism and the same is true for the neo-imperialism. If I were to take the example of China today, China via its checkbook diplomacy, a lot of its money at its ambit, the China would want other countries to be just subservient to China. So China takes a leap, it moves ahead with human development because it earns a lot of money from other countries. But the country where it goes, वो country तबाही होगी. Sri example in case. Sri Lanka, I think, has been devastated economically. India has helped it many a times and again we are helping it, but it has been devastated economically. The loans that it has taken has just burgeoned and it doesn't find any avenue to get out of it because it never paid attention to the foundational economic structures. It was only dependent upon leasing out its territories to such countries like China, and the trouble that is following now. Socio-cultural factors. Now, human development is also about the socio-cultural factors. I don't know how many of you would be visiting Greece anytime, but if you want ever to understand what this world is all about, visit places. When you go to Greece, you would be amazed to see there that the shops, the local shops, the restaurant, such things are being operated by a female. And that's a lovely thing there. You would see that she is operating it so well, she's earning. All the shops you go, majorly I'd say 90% of them operated by a female candidate. Come to India, go to Chandni Chowk, and you will understand what is human development and how socio-cultural factors are responsible for it. The socio-cultural factors can be molded if you have in your society, in your culture, an awareness to study, a charm to study, a charm to grow your human mind. But if you do not have it, the same things are going to flow. You go to, there is a village called Skellefteå in Sweden. You go there. You will be again amazed to see few things. Almost all the superstores there, the malls there, or you go to Stockholm. You will go there and you will understand that they are not so much worried about education because they understand that education is the bare minimum thing along with food that one should have. In India, you come back and you will understand people shouting for education, people shouting for a lot of things because we have actually tried it to do a kangaroo jump. Earlier, go to our Vedic times, it looks like that we were so learned. We produced so interesting books of those times. Please tell me a simple book that you would love and you would quote that this is the scripture of this decade. Please let me know. And it is not happening because we are doing a kangaroo jump now. We had that education,
Now we only want to live in that we had so. We had a proud history. We want to just live in that. We ourselves don't want to discover a few new things. We cannot study anything new. We just only want to have a proud respect to our history, and that happens in our family also. If you go back, you see. So that is the problem. The socio-cultural factors are going to be very much there, impacting your human development, and that can be seen when the human rights violations are there in your society vis-a-vis some other society. Social discrimination, this is all necessitated, this all is coming up because of the awareness and literacy at its abyss in the country. And living in the past, as I started my session with, if you live in your past, you can never understand what this life, this meaningful life of yours can give you if you only live in the past. And that has been happening. We live in the past, अरे नहीं हमारे संस्कार तो ऐसे ही, हम ये नहीं करेंगे, हमारा समाज तो ऐसे ही, हम नहीं करेंगे. Unless and until you leave this stone, nothing is going to change. And you are living in the past only. समाज वाकई में बता दे, समाज सबसे बड़ा दुश्मन है ह्यूमन डेवलपमेंट का. वो चाहता ही नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट हो. जहां ह्यूमन डेवलपमेंट होने की कोशिश होगी, समाज पकड़ लेगा. आप खुद देखिएगा, आप में से कितने लोग ही अभी आईएएस आईपीएस बनने की कवायद में है. अभी पूरा समाज आपको पीछे खींच रहा है, सुबह शाम खींच रहा है, फोन पे खींच रहा है, नेट पे खींच रहा है, व्हाट्सएप पे खींच रहा है, बातों में खींच रहा है. जैसे ही आप बन जाएंगे, अब समाज आपको साथ ले लेगा. अभी आपको खींच रहा है, अभी पूरी कवायद चालू है कि आपको रोक दिया जाए. आपको क्यों आप अलग जा रहे हो? आप समाज के साथ जुड़े रहो, काम करो, क्यों जा रहे हो? जैसे ही आप बन जाएंगे, समाज साथ बैठेगा, सर हमको तो पता ही था बनेंगे. मैम, आई न्यू दैट यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडे. Crimes, terrorism, war, etc., etc., etc. These are the socio-cultural factors. अब सिंपल सी बात है, अगर आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो ऐसा किस ग्रंथ में, ऐसा कौन वो पावरफुल, कोई भी ऐसा हो, कोई भी ऐसा रिलीजन हो, कोई भी ऐसा ग्रंथ हो जो ये कह दे कि आपको ह्यूमैनिटी का सर्वनाश करना है अपने आप को जीने के लिए, या अपने आप को जियाने के लिए, अपने किसी लैंड को बनाने के लिए. अरे जब ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी तो लैंड पर रहेगा कौन? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा. ये एक इंटरप्रिटेशन है कुछ बड़े बुद्धिमानों लोगों का. अब क्योंकि क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट विश्वास ही नहीं उनका. दे डोंट ट्रस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट. अनलेस एंड अंटिल दे ट्रस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर वेज. और यही सबसे बड़ी दिक्कत है. जब तक वो कोशिश नहीं करेंगे कि अपना इंटरप्रिटेशन, और उनका इंटरप्रिटेशन चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते. कभी भी किसी भी बहुत विद्वान इंसान से मिलिएगा, ज्ञानी की हम आपको एक पहचान बस बता दें, ज्ञानी कभी आपसे ज्यादा बहस नहीं करेगा, चुप हो जाएगा. वही ज्ञानी है, जान लीजिएगा. जो आपसे बहस पे लगा हुआ है वो कभी ज्ञानी मत मानिएगा उसको. आप ही चुप हो जाइएगा, आप ही का ज्ञान दिखेगा उसमें. बहस करना इज नॉट ज्ञान. चुप हो जाना इज अ बेटर ज्ञान, इज एन इटर्नल ज्ञान. और यहां पे क्या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है जब चीजों का, तो दुनिया को क्या लगता है, दुनिया देखिए ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, आप आसान चीजों को पहले पकड़ना चाहते हैं, हम लोग मुश्किल चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. अब जितने इंटरप्रिटेशन है वो सबसे आसान है, सबसे आसान. I would take you just few more seconds. I often find this almost all the fasts that are being kept, almost everything that is being talked about, I found that it's a bias in there. Around 75 to 80% of the fasts that are being kept in this country, almost 75 to 80% of them is being kept by women. And upon asking, you will have to just run out of your house to be saving yourself. How do you wonder ever, like why only 75 to 80% is concentrated for women? What the male was intending to do at those times? Why not for male? Now, if I answer this question, you please do not take me wrong here. Actually, what happened is, all the scriptures, if you go back and see, if you talk about the Parashar Samiti, all those Gupta period Samitis that were written, the Manusmriti, the Parashar Samiti, anything, these all are written by some male candidate only. So how could a male-dominated society would make something for them? So they passed on the burden to someone else. And that is happening actually. So socio-cultural factors are there that can distort and even can make some human development process go on.
Political factors, of course. Democracy has been accepted for time being, I would say, as one of the best notions of development, and anywhere where democracy is, the development of human will take place. Now, I can remember and I can let you know, have you heard of these revolutions that took place in Tunisia, Algeria, the tulip revolution that took place, the orange revolution that took place? Why they took place is because the people understood there. We might be growing according to GDP, but we as human beings are not growing. Unemployment was rampant there. So they wanted democracy to establish. So political ideology and the political status of the country can also lead to your human development. Now go to North Korea. Now don't go there, but just visit or understand North Korea on the websites or some YouTube videos if you can access to. Human development there would not be as such as you will find in Canada, as you will find in Germany. Why is it so? It's a very close state. So there, people would not have their value. Go to a place where the people are valued. You go to Germany or any European country, there the people will be valued. How they would be valued, you can see in some indications. If a car is passing by and if you are there on the road, the car will slow down automatically and will stop and will allow you to pass. Come to India. Let this car go and let you also cross the path. And please let me know who stops when. That's the respect for human, that's the respect for human values. And that all depends upon the political factors also. That all depends upon a true notion of democracy if it exists somewhere. So the choices, the availability of maybe lot of freedom that you have got, and the political ideology will actually give you a human development taste. Moving ahead, indicators of economic attainments. So economic attainments, that means the economic factors are also responsible for a human development. And if you see, access to all resources by all the people. Now that is a very utopian idea, that access to all the resources by all the people. It may not happen, but we are doing our best to make the resources reach to many people. I would not see this part because it's in very old data. Prevalence of poverty, deprivation, malnutrition, various types of prejudices, large-scale regional disparities. Now, when I say that my human development is being thwarted or my human development is happening, I take the basis of economy also. And in economy, I discuss that do I have that per capita income that I can afford the basic necessities or not. But even after having a per capita income, I compare the two states. I compared the states of Goa and Bihar and I got a very alarming figure. I found that the per capita income of Goa was much higher, way higher than the per capita income of Bihar. That again proves that human development can only happen when you allow the people to have at their disposal money, some choices, some freedom, so that they can develop. And this is a major problem. So regional disparities are existing, and until the regional disparities are worked with or moved aside, the human development of the initiative or whatever you're thinking may not flow. So regional disparities have been thwarting our human development. Now there is a question now. What are the regional disparities in the country and how does it impact human development? It's a direct mains question that can come. What all are these disparities existing in the country and how it impacts the human development? I think you can write an answer how your regional disparities can impact your human development. So as I said, your Maharashtra, Punjab, Haryana, Gujarat, Delhi have high per capita income as compared to UP, Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, etc., etc. So regional disparities are existing, and that shows that your human development for India, if you see. Now, I would again want to take some time of yours and let you understand the human development that is happening or that report says is about the all India. But if I go into the pockets, I understand that pocket 1 has different indices,
Pocket 2 had different indices and Pocket 3 has different indices. Pocket 1 could be lying in Delhi and could be a very great area exploring, having good per capita income, but that may not be true for this Pocket 2 or Pocket 3. So again, my challenge is not seeing the report in totality. 0.633 score that we have got in Human Development Index can be just for the whole country, but there are some parts of the country that are still struggling to have a good, your mean school of year, maybe mean years of schooling, maybe life expectancy, they're still struggling to have it. So we need to work with our regional disparities, and until and unless these regions grow. Now in this whole thing, if this has got a good value, but this has not, my answer, my human development is not coming. My human development will only come when I have all the pockets growing well, and as a result, my full country has got a good score now. Then only I'll say that yes, human development has taken place. So what can be the indicators of healthy life? Long life without ailments, longevity, availability of pre-post healthcare facilities. Now the people ask that what could be according to you the healthy life indicators. The said long life without any such ailments, availability of pre-post healthcare facilities, old age care available, adequate nutrition and safety of individual are important measures for health. The death rate that has already decreased, the infant mortality rate that has already decreased, the life expectancy that has increased, and the birth rate that is now coming down. The decline in the sex ratio in rural areas is alarming. Now I'll change here, and this is something old data that is mentioned. I must also give you a fact here. 2 months back, there was a report that was published and that said that our fertility rate is going down. Also, it had a very positive point written that the sex ratio of the country has gone beyond 1000. Please understand. As per that report, if I were to trust, maybe I'm not sure because I'm waiting for census to come. As per that report, we already have more per 1000 male, we have already have more females now, as per that report. But I'm not taking into consideration such reports because unless we have the census coming by and maybe there is a lot of things about this, then only we take into consideration. But yes, there have been some report that says that already India has achieved more female per male now, and that is going to be a very good thing if it happens, because we have seen a history now where the sex ratio have been so skewed. In parts of Haryana, in parts of Rajasthan and Punjab, we had a sex ratio around 750 per 1000 male. That was really alarming. But now if the situation so is improving, that's a very good thing. But I'll wait for census and then only I'll give you this data. I'll not speak of it before then. Indicators of social empowerment. How would you become socially empowered if you have the knowledge about society and environment? And that you will have only when you have a literacy. Literacy rate has been improving. It is higher than the national average in many states. Kerala has the highest, of course, and the state that will not have a good literacy rate as per the national average is going to be around that part of the northern belt only. So the southern states have done well with the literacy, but the northern states have not done that well. Their doing and not doing well is again related with the political zeal. A lot of things going on in the northern belt also. So if you do not have literacy, you do not have awareness, you do not have social empowerment. And if you do not have social empowerment, your human development is not coming through. Human Development Index in India, I think that we have already discussed. This is an old report. Now, this is what I was just trying to show you. So we had from 2011, we were steadily going up. And then there were some jolts and then we are coming down. 0.633 that has happened. We have slipped to around 132nd rank and we have slipped. And this is said to be accountable because, or this is said to be because of the life expectancy that has gone down majorly. The life expectancy that has gone down. Life expectancy has gone down because in the pandemic times across the world, the things have really changed. Yeah. So Human Development Index, India's HDI value at 0.63 in 2021.
life expectancy in 2021. Please understand this. In 2021, India's life expectancy at birth was recorded 67.2 and we have reduced it from 69.7. Schooling, expected years of schooling at 11.9 years and mean years of schooling is 6.7 years. Please see. Expected years show that you can still have 11.9 years of schooling, but the mean years of schooling existing is around 6.7 years only. That means that there is a dropout. Now, social empowerment means you get a lot of clout politically, economically, and then you have actually your say put up in the society. That can only happen when you have some literacy, some educational level, some awareness. How would you be socially empowered in your own village? Once you have that education with you, your awareness with you, then you become socially empowered also. So that is social empowerment, giving you a clout to speak. Maybe for your society, for your cause, you can speak up. This is a very good figure. If you see here, the mean years of schooling is around 6.7 years and the expected years of schooling is around 11.9 years. That's a very drastic change that is happening. Gross national income. The gross national income per capita stood at USD 6590. USD, that is US dollar 6590. Gender inequality index, India has been ranked 122 on the gender inequality index. That of course will cover this in current affairs. Don't have to worry for this. But this has been the scenario going on all around. Excuse me. So reasons for low HDI, I think we have already discussed. Low literacy rate, low economic development, regional disparities of the British continued. So we have low literacy level and that is because we have the human development indicators giving us poor records. Low economic development, we are not that as fast as some other countries might have been in their development phases. Now the developed countries have slowed down. We are fast. But their pace at those times would have been much faster. Also, we have a great population to take care of. Their economic growth would have catered to less population. But today, if you see India, you already have a great population. So the economic growth is just what balanced by that population growth also. Regional disparities are still existing in the country, and until they are removed away, your human development will still be taking your back seat. Population, environment and development. Now that's very correct. More population or overpopulation is environmental degradation. Also, human development is directly related with your environment. That is what I was saying, that your indicators of human development do not have environment in it. They have mean years of schooling, they have average expected years, they have life expectancy, but they are not accounting for environment. Social inequalities, discrimination, deprivations, displacement of people and abuse human rights cause low HDI. So sustainable development is going to be one of the greatest tool to increase our human development factor, or human development will be increased only once we have the sustainable development establishing in its totality. And what is sustainable development? It is wondering that we have a future to come and we pass on to the resources to them in the same pristine beauty that we have today. That is sustainable development that will come through, and it can only come through when literacy is flown through or it is trickling down to every part. Social, political, economic freedoms and choices are available, then only it will come through. Now, that's a thing that I wanted to show you. Among India's neighboring countries, Sri Lanka is at 73rd, imagine. Sri Lanka is at 73rd. China is at 79th position. Bangladesh is at 129th and Bhutan is at 127th, and then comes India at 131. While Pakistan is at 161st, Nepal 143rd and Myanmar is 149th. They are worse off. But even in Asia, if you see in your neighboring countries, Sri Lanka 73rd, maybe we don't know, the next year we'll get the report of how the Sri Lanka is doing now. China 79th, Bangladesh is 129th and Bhutan is 127th. So at least we must see that these countries are doing better, regardless of the fact that yes, our population is so much that everything gets minimized. We are working very hard, but other things get minimized. The report said around 90% of the countries registered
a decline in their SDI value in 2020 or in 2021, and that is on the account of the pandemic times. Because of the pandemic times, the human development marks or whatever parameters that were taken have seen a decline. So that is what I wanted to discuss today. Okay, I have a question for you. Please answer this question. Let's see. Which of the following gives the global gender gap index ranking to the countries of the world? A, global gender gap index. World Economic Forum, the UN Human Rights Council, the UN Women, the World Health Organization. Let's see how many of you can give me the answer. Shanawaz ji says World Economic Forum. World Economic Forum. The answer has to be A. The answer has to be World Economic Forum. That's correct. So these are very low hanging fruits. And in such questions, you don't have to apply much. Just keep a list in front of you and just see this often so that you keep this in your head. So that would be all from my side for the day. Let's meet tomorrow and complete few of the things of people and economy geography. November 24, we are starting with the batches. Arambh batch is there, and we have the expedition batches going to start from 24th. As I said, Arambh, the full comprehensive coverage of your prelims, mains, etc. for your GS needs. And you also will have the expedition batch. Now, this is going to be in English. तो ये expedition English में है. आरंभ है bilingual batch. 24 से ही चालू हो रहा है. और अगर आप देखेंगे 18 महीने का अगर आप लेते हैं प्लस जीएस तो आपको पड़ता है 49,000 में. 18 महीने का अगर आप आइकॉनिक जीएस लेंगे तो 55,000 में पड़ेगा. पर ये कैसे पड़ेगा? आपको सीएमसी कोड पे पड़ेगा. सीएमसी कोड आप लगाएंगे तो आपको 49,000 में पड़ जाएगा 18 महीने का प्लस. और आइकॉनिक आपको पड़ जाएगा 55,000. हाँ, ग्रीन एचडीआई भी होगा. ग्रीन एचडीआई भी होगा. विल डिस्कस दिस व्हेन वी डू आवर नोशनल थिंग्स. अभी एनसीईआरटी का बहुत एम्बिट बाहर हो जाएगा. ठीक है. सो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर यूपीएससी सीएसई ड्रीम. अगर आपको लगता है कि बहुत पैसा एक बार में देना है तो आप ईएमआई बना के भी दे सकते हैं. इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और बोलिएगा सर सीएमसी कोड पे मुझे ऑफर दे दीजिए आप. Okay, so combat is happening and this combat is going to be live. I think it happened today only, no? This combat happened today. हाँ, आज हो गया. तो आपको अभी अगले हफ्ते मिलेगा combat. इन combats में जरूर भाग लीजिएगा ताकि आपका स्कोर भी इंप्रूव हो, कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी, और इसमें बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप भी मिल जाता है. तो आप लोगों में से देखते हैं स्कोर भेजा कि नहीं किसी ने. आज देखते हैं. लास्ट माइल प्रोग्राम उनके लिए जो देंगे इस बार का इंटरव्यू जरूर बोलेगा. अपना डैप सबमिट करेंगे और हमारे साथ मॉक इंटरव्यू भी कर लेंगे. एंड कंपीट, ये आपके ऐप एक फीचर आया होगा कंपीट करने का. यू कैन सी दैट एंड फॉलो. दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद. अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा. निरंतरता ही सफलता की कुंजी है. जो निरंतर है वही सफल है. आप बस निरंतर रहिए, अपने आप चीजें आपके लिए साकार हो जाएंगी. दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. टेक केयर.